In this lecture, we will discuss about non-deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata, and what is the difference between deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. So, first of all, these slides are contents are taken from Coursera, different sources like a course from FAST, Islamabad, and different websites. Next is what is our agenda. In our today's topic is what we have earlier studied and what we will study in this lecture. First of all, we started with basic concepts like what is set, what are languages, what kind of operations we can perform on languages. Then we studied about regular expressions. We studied different regular expressions, how to write different regular expressions. Afterwards, the lecture was on deterministic finite automata. What is deterministic finite automata? Deterministic finite automata consists of 5 tuples. First one was set of states, then set of input alphabet symbols. Next, we studied then out of these states, one state was start state. Next, some states were designated as final states and a transition function. And afterwards, we have studied different examples about the deterministic finite automata. In this lecture, we study what is non-deterministic automata and discuss different examples of non-deterministic finite automata. A non-deterministic automata, in non-deterministic automata, a machine can exist in more than one states at the same time. Transition can be non-deterministic, like we have studied in deterministic finite automata. There can be only one state. From one state, there can be only one symbol of alphabet can go to another state. However, in non-deterministic automata, from one state we can have multiple symbols emit from one state, and that can go to different states. So we can't, हमारे पास कोई भी पॉसिबल वे नहीं है कि हम कह सकें कि इस वक्त मशीन जो है इस स्टेट में है या इस स्टेट में है. So here we have non-determinism. A finite non-deterministic finite automata consists of five things. First, like in deterministic finite automata, we have 5 tuples. Here also we have 5 tuples. First one is set of states, finite set of states. Second one, finite set of input symbol. Then one of state is start state, and there can be many final states. And transition function, which is a mapping of set of states and set of alphabet. So whenever we write an NFA, we have to write 5 tuples. First one is set of states, then input alphabet, start state, final state, and transition function. Next, we discuss an example of an NFA where which accepts substring 01. We start with start state and we say that it should contain 01. So there is a path from state 0, Q0 to Q1. Symbol 0 is read, then state Q1 to
Q2 where symbol Q alphabet 1 is alphabet symbol 1 is red, and final state is represented as double circle. So how this state is non-deterministic, or this is non-deterministic finite automata. First, see that from Q naught we can have two symbol zeros are emitting from Q0 to Q1. One is Q2 to Q0 and one is Q1. So we can't decide from if we read a symbol from input 0, so we can't decide from where we will go. Either we will stay in Q0 or Q1. So here we have non-determinism. However, when we have an DFA, we can have only one path, only one symbol is emitted from one state. So 5 tuples of these examples are: first, there are 3 states. So we have Q is equal to Q0, Q1, Q2, and input alphabet Q, 0 and 1. Alpha input alphabet is represented with sigma symbol. Start state is Q naught, and final state is Q2. And transition table, as we have studied earlier, row wise we have states. Start state is represented with arrow sign, and final state is represented with star. In columns, next we have symbols of input alphabet, like here in this example we have input alphabet 0 and 1, so we have 2 columns. First one column is 0 and second one is 1. The from state Q0 we read, if we read 0, we can go to either symbol, either state 0 or state 1. If we are in state Q0 and we read uh, if in we are state Q0 and we read 1, so which state we will go? Q0. While in DFA, I will switch to Urdu language. In DFA हम करते थे, इस तरह करते थे कि अगर एक स्टेट है तो उस स्टेट से जितने भी अल्फाबेट के सिंबल्स हैं उतने ही एरोस हम उसमें से एमिट करते थे, लेकिन एनएफए में ये जरूरी नहीं। हम यहाँ पे देख सकते हैं Q1, हम यहाँ पे देख सकते हैं Q1, और Q1 से हमारे पास कोई भी 0 का सिंबल नहीं जा रहा, तो वहाँ पे हम एक एम्प्टी सेट या एम्प्टी स्टेट, या जिसको हम फाई के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। Q1 से 1 रीड करेंगे तो हम Q2 के साथ। इसी तरह से अगर स्टेट Q2 पे हैं तो स्टेट Q2 से हम 0 रीड कर रहे हैं तो Q2 पे रहेंगे, और अगर 1 रीड कर रहे हैं तो अगेन Q2। तो इस तरह से हम किसी भी एनएफए को ड्रॉ कर सकते हैं और उसका ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट, I will give you 5 to 10 minutes after the presentation, so you can ask questions. Right now you can take notes for if you have to, अगर आपको कोई सी चीज की समझ नहीं। तो अगर हम स्टेट 0 पे हैं
क्यू जीरो पे हैं, तो अगर जीरो रीड होता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? क्या हम स्टेट जीरो पे रहेंगे, क्यू जीरो पे रहेंगे, या क्यू वन पे जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास नॉन डिटर्मिनिज्म? earlier we studied a DFA or dead state. Dead state is कि ऐसी स्टेट जहां से हम वापस नहीं आ सकते। तो जिस तरह प्रोग्रामिंग में आप वाइल लूप देखते हैं या वाइल का कीवर्ड है, तो उसके लिए वाइल एक्सेप्ट करना है तो WHILE और फाइनल स्टेट तक जाएंगे, और इस इन स्टेट्स पे इनके अलावा कोई भी सिंबल आता है तो हम उसको डेड स्टेट में एंटर करते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ similarly, if we have an NFA, तो NFA में हमें डेड स्टेट की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इम्प्लिसिट है। सो ऑन वी विल यूज ओनली द सिंबल्स विच वी जो हमें चाहिए सिर्फ वही हम लिखेंगे, और डेड स्टेट को बनाने की जरूरत नहीं। सो अभी जो हमने एग्जांपल देखी है उसमें था कि all words which contains 01 substring 01 is accepted. So next we will have an example in which NFA will accept all strings which ends with 01. So here we have state Q0, Q1, Q2. State Q0 is start state, Q2 is accepting state. So from Q0 we can have as many 0 or 1, but whenever we want to end the string, we will end it with 0, 1. So it is much simpler to draw an NFA as compared to an NFA, DFA. Sorry. So whatever जो हमें चाहिए सिर्फ हम उसके लिए ड्रॉ करें, बाकी सबको इग्नोर कर दें। स्टेट्स के सिंबल्स, इनके अल्फाबेट के जितने भी सिंबल्स हैं उनकी ट्रांजिशंस हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं। वो इम्प्लिसिटली डेड स्टेट में जाएंगे, वो इसमें इम्प्लिसिट डेड स्टेट NFA में एग्जिस्ट करेंगे। सो अगर हमने इस NFA से चेक करना है कि हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग 11000101 एक्सेप्ट हो रही है तो कैसे हो रही है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? स्टार्ट स्टेट से। स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट से फर्स्ट इनपुट सिंबल हमारे पास किया है 1, 1 रीड किया तो अगेन क्यू नॉट से हम अगेन क्यू नॉट पे ही स्टे करेंगे। नेक्स्ट इनपुट सिंबल 1 है तो क्यू नॉट से 1 रीड किया तो अगेन क्यू नॉट पे ही। नेक्स्ट इनपुट सिंबल 0 है तो 0 रीड करके हम क्या हमारे पास दो पाथ बनेंगे। अगर 0 रीड किया तो आइदर हम क्यू 0 पे रहेंगे या फिर क्यू 1 पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म है, हमारे पास दोनों पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन 0 सिंबल है तो अगर क्यू 0 पे आए तो अगेन दो पाथ बनेंगे, क्यू 0 क्यू 1। दूसरा पाथ क्यू 1 था प्रीवियस में, अगर वहां पे 0 आता है तो हमारे पास 0 का कोई पाथ नहीं है, तो हम वहां पे स्टक हो जाएंगे, नेक्स्ट हम मूव नहीं कर सकते। इसी तरह से नेक्स्ट अगेन 1 आया तो क्यू 0 से 1 रीड करके हम क्यू 0 पे रह सकते हैं या क्यू 1 पे, क्यू 0 पे रह सकते हैं। और दूसरा पाथ क्यू 1 पे था, वहां पे 1 रीड किया तो हम क्यू 2 पे जा सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास अभी सिंबल्स इनपुट सिंबल खत्म नहीं हुए, तो हम अब जब तक इनपुट सिंबल नहीं खत्म नहीं होते तो उस वक्त तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इनपुट सिंबल जीरो है, तो जीरो रीड करके क्यू जीरो पे जा सकते हैं या क्यू वन पे, और क्यू टू पे हमारे पास जीरो की कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो वहां पे अगेन स्ट्रक हो जाए। नेक्स्ट सिंबल वन है, क्यू जीरो से वन रीड किया, क्यू जीरो पे रह सकते हैं, क्यू वन से वन रीड करके हम क्यू टू पे रह सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो हम क्यू टू पे हैं और क्यू टू से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। So basically difference between NFA and DFA ये है कि NFA DFA में हमारे पास एक स्टेट पाथ बनेगा, और जबकि NFA में हमारे पास मल्टीपल पाथ बन सकते हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में बन रहे हैं, और उनमें से कोई एक पाथ जो है हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट तक जाएगा। तो इसके जो NFA था उसके लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन टेबल है, और 5 टपल्स, 3 स्टेट्स थी, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट है, और फाइनल स्टेट क्यू टू। ट्रांजिशन टेबल था, क्यू जीरो से जीरो रीड करके हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्यू जीरो पे रह सकते हैं या क्यू वन पे मूव कर सकते हैं, और क्यू जीरो से वन रीड करके हम क्यू वन पे जा सकते हैं, और क्यू वन से जीरो की ट्रांजिशन हमारे पास नहीं है, तो वहां पे हम एम्प्टी स्टेट या पाई का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्यू वन से वन रीड करके क्यू टू पे, और क्यू टू से हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो वहां पे उन सेल्स में टेबल में ट्रांजिशन टेबल में पाई इंसर्ट करें। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा can have several paths from a single state, like we have जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड या प्रीवियस एग्जांपल में देखा है। और एनएफए जो है इन सारे पाथ्स को अटेम्प्ट करता है और चेक करता है कि कोई एक पाथ भी हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाता है, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज स्ट्रिंग को हम रिजेक्ट करते हैं। सो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, और यहाँ पे बाद एनएफए में हम एप्सिलॉन भी, एक और डिफरेंस एनएफए और डीएफए में जो है कि वहाँ पे हम एप्सिलॉन भी इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम एनएफए और डीएफए में डिफरेंस देखते हैं। एनएफए में हमारे पास, डीएफए में हमारे पास हर ट्रांजिशन या हर स्टेट से सिंगल ट्रांजिशन होगी हर इनपुट सिंबल, जबकि एनएफए में एक स्टेट से मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती है इनपुट सिंबल। और each state transition on all possible symbols should be defined। और यहाँ पे जरूरी नहीं है एनएफए में कि हम एक स्टेट से मल्टीपल ट्रांजिशन डिफाइन करें या हर सिंबल की ट्रांजिशन डिफाइन करें। अगर कोई डेड स्टेट में जा रहा है तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, accepts a input if the last state is in F। हम स्ट्रिंग को तब एक्सेप्ट करते हैं कि जब उसकी इनपुट स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्ट करती है, फाइनल स्टेट में आ रही है, जबकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स जो है फाइनल स्टेट्स तक आ सकते हैं। नॉर्मली जो है डीएफए जो है कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हमें हर स्टेट से ट्रांजिशन जो है करनी पड़ती है, जबकि एनएफए जो है इजी है बिल्ड करना एज कम्पेयर टू डीएफ। जबकि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी डीएफए की इजी है, जबकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एनएफए की डिफिकल्ट। अभी जो है मैं ये देखें, एनएफ डीएफए में हमारे पास स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं और एक ही पाथ बनेगा अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, नेक्स्ट मूव करते करते, और उसके बाद हम जब इनपुट स्ट्रिंग एंड हो जाएगी तो हम डिसाइड करेंगे कि
क्या वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में हमारे पास मल्टीपल पाथ बन सकते हैं और उन मल्टीपल पाथ में से कोई एक पाथ भी अगर हमारे पास फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट तक चला जाता है तो हम कहते हैं वो स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो। Like previous example, all strings which end with so 0 1, we have start state Q1. Next, multiple path exists, and here we can have multiple accepting states. So in DFA, we have only one path which leads to final state or accepting state. However, in NFA, we can have multiple paths which can lead to accepting states. Here properties, some properties of NFA and DFA. When a machine never terminates, it always waits for the next input symbol to make the transition. It only terminates when the input string is ended or finished. The machine decided to consume next symbol from the input and when to ignore it. In NFA, so it decides when to NFA whether we will consume next input symbol or we will ignore it. Next, we can have also epsilon transitions within the alpha. Here we can have epsilon transitions. So we will end this lecture here, and we will start discuss few other examples of NFA, and we will in next lecture we will discuss how we can convert an NFA to DFA.